Hello all. Today we will uh, today we will discuss on today lecture is on the dying declaration and dying declaration relevant under section 32 clause 1 of the Indian Ordinance 1872. I've already told you about dying declaration on my last lecture, but here we will do in the detail. What is rationale behind giving so sanctity to the dying declaration or assuming it relevant? I am telling about India and England both. Why I'm telling in India and England, but as you know, the India was colony of the England. We have taken all the law was made at that time before independence. So many of the provisions is from taken from there. But what is the difference that I am telling you here, and also telling you what is the basis behind the giving so sanctity to the dying declaration. In India, it is not necessary the person making the statement must be expectation of the death at the time of making the statement. Okay, but in England, it is necessary. Next, nemo moritus presumptor mentire means no one died with a lie in his mouth. ये माना जाता है कि कोई भी person झूठ बोलकर नहीं मरेगा. But this attaches so sanctity to the dying declaration, but this doctrine is not applicable in India. India में ये applicable नहीं है, but it is applicable in England. And the last one is doctrine of necessity. It is based on the famous accord that is only the wearer know where the shoe pinches. So only victim knows the best source of injury. Victim को ही तो पता होगा कि उसे किसने मारा है, इंजरी कैसे हुई है, सबसे बेस्ट तो victim ही बता सकता है. बाकी तो maybe hearsay, maybe direct evidence. Okay. But doctrine of necessity is applicable in England also. यहाँ England में भी apply होता है. Next, what is the essential of dying declaration? Firstly, it must be statement. Statement is made by a person as to the cause of the death. कि डेथ का कारण क्या है, डायरेक्ट कॉज बताया जा सकता है, और as to any of the circumstances which resulted in death. कोई भी circumstance या ट्रांजैक्शन ऑफ सर्कमस्टांस बताए जा सकते हैं जिससे कि डेथ हुई है. द गुड एग्जांपल इन द लैंडमार्क केस इज पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल. Here the person have taken loan from a lady, his employee's daughter, but daughter have taken the employee's daughter have taken the loan from Pakla Narayan Swami of amounting to rupees 3,000, and that lady along with the husband was there, but calling Pakla Narayan Swami to collect the money, 3,000 rupees from his house, and Pakla Narayan Swami, before going for collection, told her wife that I got the letter from that lady, I'm going to his house, and after that he boarded in train. Okay, these three statements, कि I got the letter, I'm going to her house, and after that he boarded in the train. This is the circumstance. Is held to be statement of transaction. Okay, but resulted in death के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इस केस में क्या हुआ था. जब when he went there for the collection, they killed him. They cut him to the pieces, put him in the trunk and left him in the train compartment. Okay, later on other evidence and circumstantial evidence are there. It was held to be that they caused the death. But what is important here in dying declaration is that there is an initial statement to his wife that that lady is calling me to collect the money to her home, and I am going for collection of the money. And after that, the circumstance that he boarded in the train. This all has had to be circumstance, any of the circumstance which resulted in death. This is the transactions. ये 3 transactions बनाते हैं जो लास्ट में जाके रिजल्ट क्या हुआ, the person is dead. Okay, so इसको भी टाइम डिविजन कोर्ट ने माना पकला नारायण स्वामी केस में. तो there must be a case where the cause of that person that come into the question. Expectation that at the time of statement is not essential. I have already told you. Nature of proceeding civil भी हो सकता है और criminal में. Dying declaration relevant होती है civil case में भी और
क्रिमिनल केसेस में। ये आपसे कई बार पीटी में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में, जुडिशियल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। डाइंग डिक्शन रेलेवेंट इन विच केस, इन सिविल और क्रिमिनल बोथ। ओके, next, requirement for the dying diction to be best piece of evidence. Here best piece of evidence means that on the sole basis of dying declaration, the person could be convicted. Okay. So, yes, a dying declaration could be a best piece of evidence subjected to certain condition, and this is held by the Honorable Supreme Court in Advait versus Anseti Tally case. Okay. क्या कंडीशंस हैं ये अदवीर वर्सेस एनसीटी और टैली में बताया गया है। द कंडीशंस आर, firstly it should be dying declaration should be in written form. It may be oral form, but it is admissible only if it is trustworthy, reliable, trustworthy. It must be recorded by judicial magistrate or executive magistrate. But if their explanation or the circumstances such that these are not available or there is no time to contact them, then it may be recorded by police officer or doctor or any person. Next is, it must be in the question answer form. However, a narrating form is acceptable only if explanation is given for that. Time and the place of recording of dying declaration must be clearly mentioned at the in the dying declaration. The reason being that it should not be anti-time. Otherwise, it will lost its sanctity. Suppose person is dying at 6 o'clock, but dying declaration is showing at 6:30, so there is a contradiction. It is not reliable. Okay. Then next is victim signature. Victim must, the person who is giving the dying declaration must sign at the end of the dying declaration. But a reason could be explained like, reason क्या हो सकते हैं why he is not signed the statement. The reason may be that he have injured all of his fingers, is not in the position to sign the complaint, etc. Next, in victim language, it should be recorded in the language of that very person who is making the dying declaration. Okay, but if it is translated, then authenticity shall be examined. कैसे examine करेंगे आप authenticity? इसमें क्या होता है, victim जिस language में दे रहा है उसमें record कर लिया जाता है और translation की copy भी लगा दी जाती है। अगर कोई objection होता है तो उसको solve out किया जा सकता है। Next, dying declaration should not be result of tutoring. Tutoring का result नहीं होना चाहिए, किसी ने सिखा पढ़ाना दिया और mind में कुछ opposite thinking में डाल दिया, तो you will examine out the time of circumstances. कैसे examine करेंगे आप देखेंगे उस टाइम उसके पास कौन था, उसका क्या उसका एटीट्यूड था, whether somebody who is near him in the position of torturing him or not. दूसरा, certificate of the doctor is very important, and certificate of doctor में क्या चीजें होंगी जी, he or she made the statement voluntary in fit state of mind. But if not, there is no certificate of the doctor, then you can examine the doctor in the court of law. Next, dying diction must be coherent. There must not be inconsistency in dying diction. अगर inconsistency है तो explain कीजिए क्या है. Okay. Next, if there are several declaration that they must be corroborated each other. कई dying diction है तो एक दूसरे को contradiction नहीं होनी चाहिए, otherwise loss is sanctity. Okay, कि एक में कह रहा है कि कुछ reason है मरने का, दूसरे में कुछ reason है, तो वो तो गलत हो जाएगा. तो it should be corroborate करना चाहिए और victim के version. If DD gesture say here, then gesture interpretation should be recorded, and good example of this you could see in the Nirbhaya case where she recorded his gesture by pointing the finger. At that time, the person who is regarding the dying person must be recorded his gesture, that is a pointed a finger or any other whatever, plus interpretation which have taken from the gesture. Next, dying diction must be complete. But if a person is dying by making the dying declaration and the main information which is relevant here, I suppose he have recognized the accused, okay, by finger pointing, etc. If main information is your complete, then it's okay. Then its dying declaration should not be inconsistent with the natural circumstances. Dying declaration natural circumstances से exist नहीं होनी चाहिए. Reason being that क्या है कि देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. Natural circumstances क्या है, a personality in his dying declaration made a statement, a kerosene oil is put on me and
and my in-laws tried to मेरे जो in-laws हैं उन्होंने कोशिश की है कि मुझे जला के मार दिया जाए. So they put the kerosene oil on me, and but natural circumstances which is showing that there is no burning symbol on his body. There's his cloth her cloth is not touched with kerosene oil. कोई kerosene oil पाया नहीं गया है, forensic science में नहीं मिला है, आसपास कोई मैच बॉक्स को स्टोव में नहीं मिला है. सपोज मान लीजिए ये चीजें अलग भी कर ली जाती हैं तो देर में बर्निंग होनी चाहिए कुछ ना कुछ अगर जलाया है तो. और अगर नहीं जलाया है, अभी सिर्फ प्रिपरेशन है, सिर्फ केरोसिन ऑयल डाला गया है, तो केरोसिन ऑयल की कहीं स्मेल बॉडी पे फाउंड आउट कुछ ना कुछ पार्टिकल होना चाहिए. तो अगर ये सारे पूरे हो जाते हैं आपके एलिमेंट which I have told you, and this all element was sold in Atvik versus NCT of Delhi case 2010, then the declaration is it could be a sole basis for the conviction of the accused person. Next section is also related to this, and this is the relevancy of certain evidence for proving of the truth of the fact stated therein statement under section 33. इसमें क्या है, if a witness if witness ने स्टेटमेंट दिया, देखो 32 में ओनली स्टेटमेंट थी, बट इसमें विटनेस है, विटनेस खुद आया है इसमें कोर्ट में एंड ही मेक द स्टेटमेंट. Witness make the statement in a judicial proceeding or proceeding authorized by the law, then statement is relevant under section 33 in the same proceeding later on or in any other proceeding. उसी केस में भी relevant हो सकती है और किसी और में कब, when the witness is dead, जब witness dead हो चुका हो तब, ठीक है, और अपोजिट पार्टी ने उसे एविडेंस देने से रोक लिया और तब witness does not found, witness नहीं मिला और he by any reason he became incapable of giving the statement, then his earlier statement could be used in same case later in later proceeding or in another case, subjected to the some condition that party must be same, opportunity to cross examine opposite party must be given, यानी कि उसकी अर्लियर स्टेटमेंट को ऑथेंटिसिटी चेक कर ली गई है क्रॉस एग्जामिन से, तभी तो आप उसको रेलिवेंट करके एडमिट करेंगे ना. वो तो है नहीं, पर्सन अब डेड हो चुका है, तो उसकी स्टेटमेंट पहले वाली स्टेटमेंट को आप यूज करना चाह रहे हैं तभी दी हुई को, तो वो क्रॉस एग्जामिन इसी केस में तो क्रॉस एग्जामिन हो चुका हो. इश्यू सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए. जुडिशियल प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग अथॉराइज्ड बाय लॉ में स्टेटमेंट दी है उसने, बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डायरेक्शन रेलिवेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है. इसमें जब ये पार्टी सेम्स की बात कही है तो एक्सप्लेनेशन क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग बिटवीन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द accused. Okay, this is just an explanation. We are over with the topic of dying declaration. But before going, I want to brief on this. We have learned about the dying declaration under section 31, 32, clause 1. We also learned of the rationale and difference between the Indian and England. Main difference is necessary expectation of death, necessary, not necessary in India, but in England. Nemo moritus presumptum mentire, not applicable in India, but applicable in this. ठीक है, this is the difference. But similarity is doctrine of necessity, that is only victim is knows the best source of injury, same is in England. Third point is on similarity. Okay, base rationale में आपका point ये ले लीजिए, first ये nemo debt और second point ये rationale के point हो गया, second and third. Okay, कि no one die with his line and mouth. आपको दोनों बताना है, इंग्लैंड में ये है और इंडिया में ये है, और इंडिया डॉक्टर नेसेसिटी दोनों में है. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस द एसेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए. स्टेटमेंट या तो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ की होनी चाहिए और या तो सर्कमस्टांस सर्कम ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बट रिजल्टेड इन टोट लैंडमार्क केस आई टोल्ड यू पटना एंड सावन किंग अप्रैल एंड किंग एम्परर 1939. There must be a case होना चाहिए कि where the cause of that person that come into the question. Expectation that at the statement it's not essential at the time of making the statement. I have already told that expectation of that at the time of making the rank declaration is not essential.
नेचर ऑफ प्रोसीडिंग में भी सिविल और द करिजन दोनों में ही रेलिवेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन सिविल में भी रेलिवेंट है और क्रिमिनल में। ये पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को सोल पीस ऑफ एविडेंस माना जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे डायरेक्ट कन्विक्शन हो सकती है अगर ये एलिमेंट पूरे हो जाए एंड सेम वाज हेल्ड इन द अतवीर वर्सेस एनसीटी ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट बस देखते 33 क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ ही रेलिवेंट है। ये तो बंदे की डाइंग डिक्लेरेशन है, पर ऐसा भी हो सकता है कि केस चल रहा हो और केस में बंदा पहले विटनेस पेश हो चुका हो और एज ए विटनेस उसने स्टेटमेंट दी हो, तो उसकी वो बाद में वो मर चुका हो, तो उसमें ऐसे केस में उसकी स्टेटमेंट अर्लियर स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती है अगर उसने स्टेटमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी है और प्रोसीडिंग अथॉराइज बाय लॉ में दी है। उसी प्रोसीडिंग में उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती है या किसी और में भी रेलिवेंस हो सकती है। ठीक है, बट किन कंडीशन में रेलिवेंट हो सकती है? इफ इज डेड, ये दिया हुआ सेक्शन 8 में क्लियर, इफ इज डेड अगर वो मर चुका है, पहली स्टेटमेंट देने के बाद मर चुका है, या फिर उसने इनकेपेबल हो गया फॉर गिविंग द स्टेटमेंट, ठीक है, अब नहीं दे पा रहा, या फिर इतनी दूर है कि उसको बुलाना केस में खर्चा ज्यादा हो जाएगा और अनरीजनेबल हो जाएगा, कोर्ट में उसको बुलाना डिले ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अर्लियर स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उसका अपोजिट पार्टी ने आने से रोक दिया तभी आप अर्ली स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बट यहाँ सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन था, पार्टी सेम होना चाहिए जो पहले बार थी और अपने अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन, जब उसने पहली स्टेटमेंट दी है तो दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई हो। ये जरूरी नहीं है उसने किया हो या ना किया हो, क्रॉस एग्जामिनेशन करना अपोजिट पार्टी के विल पे डिपेंड करता है, इट इज नॉट नेसेसरी, इफ दे वांट दे कैन क्रॉस एग्जामिनेशन अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी दी गई हो, इश्यू सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, जुडिशियल प्रोसीडिंग में होनी चाहिए या प्रोसीडिंग अथॉराइज वाला में होनी चाहिए, बोथ इन सिविल और क्रिमिनल केस में रेलिवेंट है। एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, पार्टी सेम के एक्सप्लेनेशन है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में और इंक्वायरी में पार्टीज कौन सा होता है, डीपी और एक्यूज पार्टीज है। ठीक है, so this is all about the identification. Thank you all. If you like the lecture and want the further lecture, then subscribe to the channel and share the channel to the one who is needing. Okay, thank you. Bye bye.